Hello, how are you all? I hope all of you are fine. So this is the session for class 2nd, subject English, and today also I am taking grammar, and this is the revision lecture. In the revision lecture, we will revise today all the lessons we have discussed till now, so that कि आप सभी जो lessons हैं वो recall कर लें, and it will be helpful in doing the other assignments which will be given in you in the holidays. So and I am also giving this revision lecture because there is a revision test 1. एक revision test 1 दिया गया है आपकी grammar की book में. You have to do that revision test 1 also in your book. जिनके पास बुक है और जिनके पास बुक नहीं है, they have to do in the notebook. So this is the revision test 1 in your PC Rans grammar book. Now let me tell you the topics which I will cover today. जो topics मैं आज cover करूँगी. So the topics which I will discuss today are sentences, articles, nouns, pronouns and adjectives. So these are the topics or these are the lessons जो कि आपने किए हैं पिछले कुछ टाइम में, and today also I am giving you the overview or you can say highlights इन lessons की मैं आज आपको highlights दूंगी. So let's begin. So the first topic, or you can say the first topic we can cover today, we will cover today is sentences, and this is your second lesson in your book. And what are sentences? Sentences is a group of words that has complete meaning. We always begin a sentence with capital letter and in the end we put full stop or question mark. Sentences क्या होते हैं? Group of words होते हैं जिनका की एक मीनिंग होता है. That means जो वर्ड्स आप मीनिंगलेस लिखते हैं, दोज आर नॉट सेंटेंस. राम गोइंग, सो ये कोई सेंटेंस नहीं है, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है. और आपको क्या देखना है कि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए और एंड में पंक्चुएशन मार्क्स आने चाहिए. व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क्स? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. दीज आर द मार्क्स विच आर कॉल्ड punctuation mark. Even comma is also come under punctuation mark. हर क्लासेस में आपको punctuation marks के बारे में भी बताया जाएगा. Now let me tell you how you will arrange a sentence like live I Delhi in. So you will arrange I live in Delhi और यहाँ पर full stop आना ज़रूरी है और the first letter should be capital. आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है. Like one more sentence if I am take that what is your name? So the punctuation mark comes over here is question mark. This is punctuation mark and the first letter is capital. You have to take care while arranging the sentences. I hope you understand what I am saying. आपको सेंटेंस अरेंज करने भी आ सकते हैं. आपसे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि वेदर द सेंटेंस इज रॉन्ग और राइट. सो इन दिस वे यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, यू हैव टू अरेंज सेंटेंसेस. नाउ the next topic in the series is nouns, and this is your third lesson and fourth lesson which cover nouns, in which we cover the naming words. Nouns are basically called naming words जिनका की कोई नाम होता है. और in the fourth chapter we came to know about the common noun and proper noun. और हमें next chapter fourth lesson 4 में क्या पता चला था? common noun और proper noun क्या होते हैं. Any कॉमन पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन. जिसकी में कोई स्पेशल थिंग नहीं दिखाई देती, इट कैन बी एनी वन, दैट इज कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल बॉय, पार्क, स्कूल, डॉग. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन. लेट मी टेल यू अबाउट प्रॉपर नाउन ऑल्सो.
These are the special noun, or you can say special name of any person, place or thing. Like Ram, like Rajmahal, Bruno. So these are the special names which are given to it and they are called proper noun. I hope you understand. आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा proper noun और common noun के बारे में. Now let's continue with the next topic. Now our next topic is numbers. I very well know क्योंकि numbers हमने अभी कुछ ही दिन पहले किए हैं. So all of you are able to answer what I am asked. That numbers are categorized into two parts, one and many, or you can say singular and plural. और आप singular को plural बनाते हैं, इनके लिए कुछ rules हैं and you have to learn those rules. Even you have given test also, आप लोगों ने test भी दे दिया है, but still आप लोगों को ये revise करना है. Now noun ends with K, N and D etc. We put S. जो noun K, N और D से end होते हैं या उससे भी अलग कई words होते हैं तो वहाँ हम सिर्फ S लगाएंगे. Like book, books. So this is one first rule which you have to take care, that where you put S. Now the second rule, noun ends with SH, CH, O and X. जो आपके नेमिंग वर्ड्स SH, CH, O, X से एंड होते हैं वहाँ आप क्या ऐड करेंगे? ES. फॉर एग्जाम्पल फॉक्स, FOX, फॉक्स, X is there, so you add ES, FOX, ES, foxes. So fox का प्लूरल क्या बना? Foxes. Now nouns end with Y, you have to put IES, babies. Okay, जहाँ Y आएगा वहाँ पे आपने IES ऐड करना है Y को हटा के. And where the FE or F is there, you have to put VES. Knife, knives, leaf, leaves. So in this manner you have to take care of these rules while changing singular to plural or plural to singular. I hope you understand. Now the next topic, adjectives. Adjectives को हम क्या कहते हैं? Describing word. जो किसी naming word को describe करे, that is called adjective. Like long, ruler, good boy, full glass, red frog and many more. आप जिसको भी किसी वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड. लाइक कलर, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड अपीयरेंस, दीज आर द फ्यू फीचर्स विच वी टेक while describing a naming word. ये हमको ध्यान में रखना होता है कि नेमिंग वर्ड ऐड करते हुए डिस्क्राइबिंग वर्ड ऐड करते हुए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कम्स बिफोर नाउन. डिस्क्राइबिंग वर्ड कब आता है? एक नाउन से पहले. सो दीज आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. लाइक गुड कम्स बिफोर बॉय, रेड कम्स बिफोर फ्रॉग. So these are called describing words. Now the next topic is article, and in articles you very well know a and the. A comes before consonants. Consonants are 21 in number. And comes before vowel. Vowels are 5 in number. A, E, I, O, U. These are vowels. And the comes before the particular things like sun, moon, या कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक ही है या उसका आप कोई पर्टिकुलर फीचर बता रहे हैं. those are called articles. Even assignments are also given. Even you have done in the homework also. और आप लोगों को a and the जो है वो काफ़ी अच्छे से आ भी गया है. So you have to do accordingly.
Now the next topic is pronoun, and pronouns are called replacing word. pronoun को हम क्या कहते हैं? replacing word. जो words noun की जगह replace किए जाते हैं, those are called pronouns. Like Ram is a boy. Ram is 8 years old. अगर हम ये सेंटेंस लेते हैं कि राम इज अ बॉय एंड राम इज 8 years old, so how we replace that noun with a pronoun? हम noun को कैसे रिप्लेस करेंगे? राम इज अ बॉय, ही इज 8 years old. यहाँ हमने राम को रिप्लेस कर दिया एक प्रोनाउन से. इन दिस वे यू रिप्लेस अ नाउन विद अ प्रोनाउन. इस तरीके से भी एक्सरसाइज आ सकती है. अंडरलाइन द प्रोनाउन, इस तरीके से भी एक्सरसाइज आ सकती है. तो यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली एंड इन अ वेरी इजी वे यू कैन रिकॉल ऑल द थिंग्स. आई होप आप लोगों को सभी टॉपिक्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे. नाउ आई एम टेलिंग यू अगेन द नेमिंग the replacing words again. So nouns are singular and plural, you very well know. Even pronouns are also singular and plural. These are the singular ones: I, he, she, it, me, him, her, it, we, they, us, them. These are the plural ones. You is the pronoun which we can use in singular and plural both. So I hope you recall all the pronouns or replacing words which we use. Now again I am going to tell you, with a male it can be a boy, father, man, teacher. You will use he, his, him. He, him, his. ही ऑलवेज आपका सब्जेक्ट यानी कि शुरू में आता है एंड हिम एंड हिज मोस्टली जो है वो लास्ट में आते हैं. ही इज अ बॉय, आई लाइक हिम. गर्ल, फॉर गर्ल, वुमेन, और यू कैन से फीमेल, वी यूज शी और हर. शी इज माई मदर, शी कुक्ड food for me, I like her. So her, she, ये सब भी क्या है? Pronouns. For things or animals we use it और they. It आप singular के उसमें यूज करेंगे and they is used for plural. I is also used. I mostly आप अपने लिए यूज करते हो and for I the object will be my and me. Like father, mother. Father you say he, mother you put he, and if you are talking about your family you can say we. So these are the basic words which you use in the form of the pronouns. Now let me show you the revision test 1 which is given in your book. This is your revision test 1 which is given in your book on page number 44. This is the question 1. Arrange the following words to make sentences. Use the correct punctuations. Punctuations आपको full stop, question mark वगैरह जहाँ आएगा आपको properly लगाना है. You have to take care. First letter जो होगा वो capital होगा and in the end we will put the punctuation mark. A part. Live, you, do, where. So sentence क्या बनेगा? Where do you live? W will be capital and in the end we will put question mark. So A part I have told you. A part मैंने आपको बता दिया है. B, C, D, E and F you have to do yourself. Now let's continue with the second question. So in the second question fill in the blanks with a, n or the. और ए एन और द क्या है? आर्टिकल्स. सो द फर्स्ट वन, दिस इज अ पेन, फुल स्टॉप, डैश पेन इज ब्लू. अब यू कैन से कि ब्लू वर्ड लगाने से ये पेन क्या हो गया है? पर्टिकुलर. सो वी विल राइट
The pen is blue. Now the other parts B, C, D, E, F you have to do. Now come to the third question which is given in your book. Underline the common nouns and circle the special names in the following sentence. Common names are called common nouns and special names are called proper nouns. So you have to circle the proper and underline the common. Kiran is going to school. Over here, Kiran is proper noun, so you will circle it, and school is common, so you have to underline this part. B, C, D, E, F other parts are also given which you have to do of your own, जो आपको खुद से करने हैं. जिन बच्चों के पास बुक है वो इसको बुक में करेंगे. जिनके पास बुक नहीं है they will do in the notebook and they can write only answers only. वो सिर्फ आंसर्स लिख सकते हैं. As I have told you, D, E and F part of the C third question, so you have to do these parts also. Now the fourth question, fill in the blanks with correct pronouns. Pronouns are the replacing words. उनको आपको इस particular question में fill करना है. My father is my hero. Dash is very close to me. मेरे father मेरे hero हैं. Dash is very close to me. He is very close to me. Likewise आपको ये other sentences भी करनी है. B, C, D, E and F. So you have to fill with pronouns. Now last but not the least question, that is question number 5. Fill in the blanks choosing describing words from the box given below. One has been done for you. A part, beautiful flowers. So beautiful is the adjective or you can say describing word. You have to fill other B, C, D, E, F part with the help of the help box which is given over here. इस हेल्प बॉक्स को यूज़ करके आपको ये फर्दर एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है. आई होप एवरीबडी इज़ एबल टू डू इट. दिस इज़ वेरी interesting and easy exercise, so please do it carefully, and if you are not able to do, you can take help from your parents, or on the next day you can check it from the solution which is given on the EDQUA. So students, as you know that your homework is given in the form of assignment or revision test, or it can be simple homework which is given to you. You can find those homeworks on the EDQUA website, and on the very next day we provide you the solution of the homework. So today in this lecture I don't have any solution because yesterday you have given the test, and the solution of the test is also on the EDQUA. आपको अपना correction work accordingly करना है. You have to do correction accordingly of the test. So I hope you understand all the lessons which we have discussed today. Revise it and do the revision test 1 accordingly. Again I am repeating, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोटबुक में सिर्फ आंसर लिख सकते हैं, and complete the work and send it on the mail which is given on the homework. So you have to like these lectures. आपको ये lectures जो अच्छे लगते हैं आपने like कर सकते हैं, and you can subscribe these channel EDQUA channel, so that जैसे ही कोई नया lecture आए you positively came to know कि there is some lecture for you. I hope you understand. Thank you. Have a good day.